being concluded. Farewell to the Chairman Rajya Sabha, Honorable Prime Minister. आदरणीय सभापति जी, आज हम सब सदन के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री वेंकैया नायडू जी को उनके कार्यकाल की समाप्ति पर उन्हें धन्यवाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये इस सदन के लिए बहुत ही भावुक पल है। सदन के कितने ही ऐतिहासिक पल आपकी गरिमामय उपस्थिति से जुड़े हुए हैं। फिर भी अनेक बार आप कहते रहे हैं, आई हैव रिटायर्ड फ्रॉम पॉलिटिक्स बट नॉट टायर्ड फ्रॉम पब्लिक लाइफ। और इसलिए इस सदन को नेतृत्व देने की आपकी जिम्मेदारी भले ही पूरी हो रही हो, लेकिन आपके अनुभवों का लाभ भविष्य में सुदीर्घ काल तक देश को मिलता रहेगा। हम जैसे अनेक सार्वजनिक जीवन के कार्यकर्ताओं को भी मिलता रहेगा। आदरणीय सभापति महोदय, आजादी के अमृत महोत्सव में आज जब देश अपने अगले 25 वर्षों की नई यात्रा शुरू कर रहा है, तब देश का नेतृत्व भी एक तरह से एक नए युग के हाथों में है। हम सब जानते हैं कि इस बार हम एक ऐसी 15 अगस्त मना रहे हैं जब देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, प्रधानमंत्री सबके सब वो लोग हैं जो आजाद भारत में पैदा हुए हैं। और सबके सब बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं। मैं समझता हूं उसका अपना एक सांकेतिक महत्व है, साथ में देश के नए युग का एक प्रतीक भी है। आदरणीय सभापति महोदय, आप तो देश के एक ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिसने अपनी सभी भूमिकाओं में हमेशा युवाओं के लिए काम किया है। आपने सदन में भी हमेशा युवा सांसदों को आगे बढ़ाया, उन्हें प्रोत्साहन दिया। आप लगातार युवाओं के संवाद के लिए यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस लगातार जाते रहे हैं। नई पीढ़ी के साथ आपका एक निरंतर कनेक्ट बना हुआ है और युवाओं को आपका मार्गदर्शन भी मिला है और युवा भी आपको मिलने के लिए हमेशा उत्सुक रहे हैं। इन सभी संस्थानों में आपकी लोकप्रियता भी बहुत रही है। मुझे बताया गया कि वाइस प्रेसिडेंट के रूप में आपने सदन के बाहर जो भाषण दिए, उनमें करीब करीब 25% युवाओं के बीच में रहे हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आदरणीय सभापति महोदय, व्यक्तिगत रूप से मेरा यह सौभाग्य रहा है कि मैंने बड़े निकट से
आपको अलग अलग भूमिकाओं में देखा है। बहुत सारी आपकी भूमिका ऐसी भी रही जिसमें आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने का भी मुझे सौभाग्य मिला है। पार्टी कार्यकर्ता के रूप में आपकी वैचारिक प्रतिबद्धता रही हो, एक विधायक के रूप में आपका कामकाज हो, सांसद के रूप में सदन में आपकी सक्रियता हो, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में आपका सांगठनिक कौशल्य और लीडरशिप की बात हो, कैबिनेट मंत्री के रूप में आपकी मेहनत, नवाचार का आपका प्रयास और उससे प्राप्त सफलताएं देश के लिए बहुत उपकारक रही है, या फिर उपराष्ट्रपति और सदन में के सभापति के रूप में आपकी गरिमा और आपकी निष्ठा। मैंने आपको अलग अलग जिम्मेदारियों में बड़े लगन से काम करते हुए देखा है। आपने कभी भी किसी भी काम को बोझ नहीं माना। आपने हर काम में नए प्राण फूंकने का प्रयास किया है। आपका जज्बा, आपकी लगन हम लोगों ने निरंतर देखी है। मैं इस सदन के जरिए प्रत्येक माननीय सांसद और देश के हर युवा से कहना चाहूंगा कि वो समाज, देश और लोकतंत्र के बारे में आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। लिसनिंग, लर्निंग, लीडिंग, कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग और रिफ्लेक्टिंग, रिकनेक्टिंग जैसी किताबें आपके बारे में बहुत कुछ बताती हैं। आपके ये अनुभव हमारे युवाओं को गाइड करेंगे और लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी किताबों का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि उनके टाइटल में आपकी वो शब्द प्रतिभा झलकती है जिसके लिए आप जाने जाते हैं। आपके वन लाइनर्स, बीट लाइनर्स होते हैं और विन लाइनर्स भी होते हैं। यानी उसके बाद कुछ और कहने की जरूरत ही नहीं रह जाती। योर ईच वर्ड इज हर्ड, प्रिफर्ड एंड रेवर्ड एंड नेवर काउंटर्ड। कैसे कोई अपनी भाषा की ताकत के रूप में और सहजता से इस सामर्थ्य के लिए जाना जाए और उस कौशल से स्थितियों को दिशा मोड़ने का सामर्थ्य रखे। सचमुच में आपके इस सामर्थ्य को मैं बधाई देता हूं। साथियों, हम जो भी कहते हैं वो महत्वपूर्ण तो होता ही है, लेकिन जिस तरीके से कहते हैं उसकी अहमियत ज्यादा होती है। किसी भी संवाद की सफलता का पैमाना यही है कि उसका गहरा इंपैक्ट हो, लोग उसे याद रखें और जो भी कहें उसके बारे में लोग सोचने के लिए मजबूर हो। अभिव्यक्ति की इस कला में वेंकैया जी की दक्षता
उस बात से हम सदन में भी और सदन के बाहर देश के सभी लोग भली भांति परिचित हैं। आपकी अभिव्यक्ति का अंदाज जितना बेबाक है उतना ही बेजोड़ भी है। आपकी बातों में गहराई भी होती है, गंभीरता भी होती है, वाणी में बीट भी होता है और वेट भी होता है, वार्मथ भी होता है और विजडम भी होता है। संवाद का आपका तरीका ऐसे ही किसी बात के मर्म को छू जाता है और सुनने में मधुर भी लगता है। आदरणीय सभापति महोदय, आपने दक्षिण में छात्र राजनीति करते हुए अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। तब लोग कहते थे कि जिस विचारधारा से आप जुड़े थे उसका और उस पार्टी का निकट भविष्य में तो दक्षिण में कोई सामर्थ्य नजर नहीं आता है, लेकिन आप एक सामान्य विद्यार्थी कार्यकर्ता से यात्रा शुरू करके और दक्षिण भारत से आते हुए उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के शीर्ष पद तक पहुंचे। ये आपकी एक अविरत विचार निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा और कर्म के प्रति समर्पण भाव का प्रतीक है। अगर हमारे पास देश के लिए भावनाएं हो, बात कहने की कला हो, भाषाई विविधता में आस्था हो, तो भाषा क्षेत्र हमारे लिए कभी भी दीवार नहीं बनती है। ये आपने सिद्ध किया है। आदरणीय सभापति महोदय, आपकी कही एक बात बहुत लोगों को याद होगी, मुझे तो विशेष रूप से याद है। मैंने हमेशा सुना है आप मातृभाषा को लेकर के बहुत ही टची रहे हैं, बड़े आग्रही रहे हैं, लेकिन उस बात को कहने का आपका अंदाज भी बड़ा खूबसूरत है। जब आप कहते हैं कि मातृभाषा आंखों की रोशनी की तरह होती है, मातृभाषा आंखों की रोशनी की तरह होती है, और आप आगे कहते हैं और दूसरी भाषा चश्मे की तरह होती है। ऐसी भावना हृदय की गहराई से ही बाहर आती है। वेंकैया जी की मौजूदगी में सदन की कार्रवाई के दौरान हर भारतीय भाषा को विशिष्ट अहमियत दी गई है। आपने सदन में सभी भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। सदन में हमारी सभी 22 शेड्यूल लैंग्वेज में कोई भी माननीय सदस्य बोल सकता है, उसका इंतजाम आपने किया। आपकी ये प्रतिभा, आपकी ये निष्ठा आगे भी सदन के लिए एक गाइड के रूप में हमेशा हमेशा काम करेगी। कैसे संसदीय और शिष्ट तरीके से भाषा की मर्यादा में कोई भी अपनी बात प्रभावी ढंग से कह सकता है, इसके लिए आप प्रेरणा पुंज बने रहेंगे। आदरणीय सभापति महोदय, आपकी नेतृत्व क्षमता, आपके अनुशासन ने इस सदन की प्रतिबद्धता और प्रोडक्टिविटी को नई ऊंचाई दी है। आपके कार्यकाल के वर्षों में राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी 70% बढ़ी है। सदन में सदस्यों की उपस्थिति बढ़ी है। इस दौरान करीब करीब 177 बिल पास हुए या उन पर चर्चा हुई, जो अपने आप में कीर्तिमान है। आपके मार्गदर्शन में
ऐसे कितने ही कानून बने हैं जो आधुनिक भारत की संकल्पना को साकार कर रहे हैं। आपने कितने ही ऐसे निर्णय लिए हैं जो अपर हाउस की अपवर्ड जर्नी के लिए याद किए जाएंगे। सचिवालय के काम में और अधिक एफिशिएंसी लाने के लिए भी आपने एक समिति का भी गठन किया। इसी तरह राज्यसभा सचिवालय को सुव्यवस्थित करना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, पेपरलेस काम के लिए ई ऑफिस सिस्टम को लागू करना, आपके ऐसे कितने ही काम हैं जिनके जरिए उच्च सदन को एक नई ऊंचाई मिली है। आदरणीय सभापति महोदय, हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम। अर्थात जिस सभा में अनुभवी लोग होते हैं वही सभा होती है, और अनुभव लोग वही है जो धर्म यानी कर्तव्य की सीख दें। आपने मार्गदर्शन में राज्यसभा ने इन मानकों को पूरी गुणवत्ता से पूरा किया है। आप माननीय सदस्यों को निर्देश भी देते थे और उन्हें अपने अनुभवों का लाभ भी देते थे, और अनुशासन को ध्यान में रखते हुए प्यार से डांटते भी थे। मुझे विश्वास है कि किसी भी सदस्य ने आपके किसी भी शब्द को कभी अन्यथा नहीं लिया। ये पूंजी तब पैदा होती है जब व्यक्तिगत जीवन में आप उन आदर्शों और मानकों का पालन करते हैं। आपने हमेशा इस बात पर बल दिया कि संसद में व्यवधान एक सीमा के बाद सदन की अवमानना के बराबर होता है। मैं आपके इन मानकों में लोकतंत्र की परिपक्वता को देखता हूं। पहले समझा जाता था कि अगर सदन में चर्चा के दौरान शोरगुल होने लगे तो कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है, लेकिन आपने संवाद, संपर्क और समन्वय के जरिए न सिर्फ सदन को संचालित किया बल्कि उसे प्रोडक्टिव भी बनाया। सदन की कार्यवाही के दौरान जब सदस्यों के बीच कभी टकराव की परिस्थिति पैदा होती थी तो आपसे बार बार सुनने को मिलता था, लेट द गवर्नमेंट प्रपोज, लेट द ऑपोजिशन अपोज एंड लेट द हाउस डिस्पोज। इस सदन को दूसरे सदन से आए विधेयकों पर निश्चित रूप से सहमति या असहमति का अधिकार है। यह सदन उन्हें पास कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है या अमेंड कर सकता है, पर उन्हें रोकने की, बाधित करने की परिकल्पना हमारे लोकतंत्र में नहीं है। आदरणीय सभापति महोदय, हमारी तमाम सहमतियों और असहमतियों के बावजूद आज आपको विदाई देने के लिए सदन के सभी सदस्य एक साथ उपस्थित हैं। यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। ये आपके लिए इस सदन के सम्मान का उदाहरण है। मैं आशा करता हूं कि आपके कार्य, आपके अनुभव आगे सभी सदस्यों को जरूर प्रेरणा देंगे। अपने विशिष्ट तरीके से आपने सदन चलाने के लिए ऐसे मानदंड स्थापित किए हैं जो आगे इस पद पर आसीन होने वालों को प्रेरित करते रहेंगे। जो लेगेसी आपने स्थापित की है, राज्यसभा उसका अनुसरण करेगी, देश के प्रति अपनी जवाबदेही के अनुसार कार्य करेगी। इसी विश्वास के साथ आपको पूरे सदन की तरफ से, मेरी तरफ से
अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और आपने देश के लिए जो कुछ भी किया है, इस सदन के लिए जो कुछ भी किया है, इसके लिए सबकी तरफ से ऋण स्वीकार करते हुए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। नன்றி வணக்கம். ஜோஸ் கே மணி. Sir, today I stand before the House to express my immense gratitude towards you for the inclusive and inspiring leadership you have exhibited as a chairman of Rajya Sabha. I consider it as my honor to have worked under your chairmanship, witnessing your passionate effort in strengthening the parliamentary democracy in our country. There are indeed, sir, in the House various instances where the House has experienced heated argument and verbal quarreling, exchange of words, which I must say were masterfully diffused by an unbiased approach, light humor, simultaneously ensuring the gravity of the issue at hand was not compromised. As a member hailing from the southernmost state of the country, Kerala, I also would like to thank you for acting as a strong bridge between the south and the national capital. Coming from a southern state yourself, you are very well aware the diversity in culture and tradition and have worked towards ensuring these differences will not cause any strife. Your presence in a way ensured the southern state will not be overlooked. So to conclude, your tenure and presence as a chairman had made an impact in Rajya Sabha with your intervention, deliberation, words and action and decisions. As days and as weeks and months and years go by, always your name will be remembered every nook and corner of this August House. Sir, adieu and all the best to you from my party, Kerala Congress, in your future endeavor. Thank you, sir. Thank you, Justice Kumani. Ajit Kumar. Pati ji. Sri Abdul Wahab. Sir, normally as you know I am talking very less, but today I am speechless. But in farewell to your case, I don't know. I can go up to half an hour, 1 hour. Today is the first time I am feeling so. But you are already told it is 2 minutes and so many people. So I am bound to finish as usual because last day I don't want to make any problem for you. So this, my leader, Said Sadiq Ali Shihab Tangal, today morning called me and told me about you and about IUML position. So congratulations for what you know, for not being any just like this position tomorrow. Because as a Venkaiah Naidu, we know we expect a lot from you. As before you were BJP president, we know all your backgrounds, but I heard that and you told also in front of our BJP people, after this assignment, you are not going to public politics. But we expect more from you than in politics, with a lot of experience and all. And I remember you, when my invitation and all, you came to our college. And it was a wonderful experience. And you were that sort of to youth, your advice and all. You can still do, and we will always call you. I don't know whether you will agree or not. But please listen to our call whenever you are out of this office. This Prime Minister and Kargeji told much about you. So I don't want to add. And especially Derek is telling about the one month old or 1 year old Venkaiah ji. So I just one recommendation or pleading to you. When you demit office, you got good connection with all BJP people. You used to be the BJP president. Still ideology will not change, no? So tell them that the democratic atmosphere should be here in India, and especially in, at least in Parliament. And thank you very much, sir. I expect all the cooperation from you.
I tell all this side and that side, respect democracy. That's Yes. Will do. all. G.K. Vasan. बार-बार होता है. Thank you. Sri P.T. Usha. For a change. Most respected Chairman Rajya Sabha Sri Venkaiah Naiduji, a great orator, scholar who always stood along with the downtrodden people, particularly during his Nellore days. Sir, your immense service to the society as a whole, the nation will ever remember. We, the common man, always extend our love and affection towards your gentle parenting who first time stepped into the temple of democracy. I personally have been experiencing the same since the last few weeks. Sir, we can express our gratitude towards you to say a mere thank you, but you will always live in our hearts as a master of oratory. On behalf of our entire Indian sports fraternity, I express my deep gratitude towards your true sportsman spirit, which reflects in your entire life and as a chairman of this august house. I sincerely wish you and your all family members good health, peace, and cheer, and I wish that you would continue to serve the nation and community as a whole. Thank you, sir. Thank you, Ma'am. Sri Jawahar Sarkar. Sir, thank you for this opportunity. Thank you, Karimji. Dr. John Brittas. Thank you, sir. I endorse whatever has been spoken here by my esteemed and senior colleagues, including the Honorable Prime Minister and Leader of the Opposition. Nevertheless, I consider this as my bounden duty to place the appreciation, gratitude, and best wishes of my party, CPIM, on record. Sir, as you know, we are from the opposite sides of the ideological spectrum. But, sir, I have no hesitation in lauding your clarity of conviction. Sir, you belong to the category of statesmen with an organic thinking. What has impressed me the most, sir, I would speak what I feel at heart. I won't speak a word which is not part of my thought process. Sir, you are a living example of the great diversity of this nation. And that is the underlying thread of the unity of this country, sir. So I have a reason why I say so. When there is a chorus that is shriller, louder for uniformity of behavior, culture, language, and even food, sir, you stand tall as a lamppost of rich diversity that the country is and should be, sir. Sir, can I submit you, sir? Even the spotless Dravidian attire shows that. Sir, many have spoken about the hospitality, sir. So I have my personal experience of almost 3 decades. Javadekar-ji, more than 3 decades. Please note the point. Sir, as a journalist, I have observed you shifting your base from Andhra to the vortex of the national politics. Sir, you are simply the king of hospitality. I don't think anybody else in this house can match you. Sir, I would relish those days when we had sumptuous non-vegetarian meals. I stress on that, non-vegetarian meals. I am vegetarian too, as much as I am non-vegetarian. At your house and at the BJP office. Nadaji, please note the point. Many of my juniors in journalism are pleasantly surprised to think about the menu at that time, sir. Sir, at that time, prawns and cooks used to fly from Vijayawada and Guntur to Delhi. Sir,
I think I would be missing in my duty if I don't spell out this point. There is a feeling amongst many, sir, that you would go down in the history as the president the nation has missed. So this is something which I thought I should say. Sir, yes, sir, I have been seeing the house from inside and outside, from above, sir. Sir, I can't think of a chairman who got involved with the nitty-gritty of the house like you, sir. I have not seen any chairman, sir. Many used to come here, sit for an hour and leave. But you used to get involved, even to the minutest aspect of the house, sir. This, I think, sir, your long, grueling journey from a village from Andhra, becoming an MLA, MP, minister, and also helping the organizational structure of a political party. And, sir, with this long experience, you could even read the minutest emotion in our minds. Sir, one important aspect in your approach was that you are cut for the parliamentary democracy. I should say that. And you are living at a time the parliamentary democracy needs you more. I would say that, sir. Derek was saying about Parliament becoming a dark chamber. I don't know what he actually meant, but I feel that you are living at a time when we require you more, sir. Sir, your habit of disagreeing, but allowing us and respecting us the right to express our view was something which should be talked about, sir. Sir, one more thing, sir. Small political parties. That is something which I need to say, because you believed and you had the conviction that though some of the parties may be insignificant in numbers, their voice are relevant and vital to the existence of this nation as a plural polity. Sir, I would be failing in my personal duty if I don't speak about my experience, sir. Please give me 1 minute, sir. Sir, after making my maiden speech on the following day, sir, you should allow me to say that because Honorable PM was saying that you have the pension to promote young and new members, sir. On the following day, I got a call from Vice President's house. I was pleasantly surprised and I was little concerned or worried also. And after a few seconds, you were on the line, sir. And you told me that you may not agree with me fully, but my speech was wonderful and you appreciated the homework which I did, sir. Sir, I didn't even share this to my family because my family would think that, you see, my character has changed after becoming a member of parliament. Sir, but you followed it up. And you also said something, sir. You said that after reading all the newspapers, you were so sad that not even a single newspaper wrote a single line about my speech which impressed you, sir. Sir, you didn't stop there, sir. After 2 days at a public function, you narrated this, and you also said about the sad plight of the childless, sir. It was a perfect indictment of the media, which is indulging in trivial, sensationalism, and frivolous. Right. I also partially respond, sir. Sir, the other day, when few of us came to your chamber with my leader, Mr. M Venkaiah, Mr. Vishwam, and Tiruchi Shiva, he is also a leftist leader, and you were pouring out your reminiscence about the legendary communist leaders. You talked about Bhupesh Gupta, you talked about Indrajit Gupta, A.K. Gopalan, you talked about Somnath Chatterjee, and you said, though you differ in ideology, you would want the leftist movement to survive and to be present in parliament in full vitality and vigor, sir. Sir, one more minute, sir. Sir, when you inaugurated the school in Chennai, because since Shivaji didn't say, I should say that, you quoted renowned Tamil poet Bharatiyar, and you said, it is more virtuous to educate a child than to build 1,000 temples. So that is very relevant, sir. Sir, you have set a benchmark, and I would say it is not an obstacle for your successor, but it's an inspiration.
Like Mahatma Gandhi said, sir, as many men has exalted in greatness when they relinquished the chair. As he said, power is of two kinds. One is obtained by the fear of punishment and other by acts of love. Power based on love is 1,000 times more effective and permanent than the one derived from fear of punishment, sir. Wish you the best for all your future endeavors, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Honorable members, I have a list before me. We have 32 speakers. Keep the time in mind, and I don't want to cut anybody in between. यही मेरी काम है. धन्यवाद राम गोपाल जी. श्री विनय विश्वम. Sir. Sir, these moments are really such moments where we feel that each words are so valuable. We find difficult to find the apt words to express our hearts. Sir, I remember the first day when I made a call to you. At that time, I was only a designate to become a member of the Rajya Sabha. But you were so kind to allow me to come to your house to meet you in person. I came there. I thought that you will give me 2 minutes or 3 minutes as you do here. But on that day, you were so benevolent. You were so kind to give me 30 to 40 minutes to talk. You talked about your past, your RSS days, the days in which you walked barefooted through the villages of southern India, Karnataka, Tamil Nadu, and Andhra, of course. Then you told me, ideologies may differ, but man, humankind, the greatness of that you mentioned to me. And on that day, you told the same thing that Brittas was telling here. You told me about the glorious past of the communists in the Parliament of India. You mentioned the names of Bhupesh Gupta, Indrajit Gupta, Jyotirmay Basu, Kiran Mukherjee, of course. You mentioned those names. And you told opposition has a role to play in democracy. And you told communists may be small in number. And you mentioned one more thing. Why the communists are remaining separated? You demanded for the communist unity, for which my party stands. And I remember, you very correctly told communists in that way can play a better role for the communists and for the democracy of this country. And so many such fond memories are there. Sir, you have scolded a lot in this house when we made some slogans here, then we made some ruckus, you may call it. I remember it. It was, sir, not purposeful. When I saw your face with sadness, I tell you now, I felt so sad, as if my uncle is feeling sad on me. That feeling you have engaged on all of us. Such is true that we differed on so many issues. But the man in you, I should tell, is a man who should be mentioned always in capital letters. Sir, once you made an open call to the public that the public should teach a lesson to all the members who make ruckus in the house. It was covered by all the newspapers. I was forced to write an article because my mind told me it should not go unnoticed. I was opposing your viewpoints. In that article I wrote, how you find us, how you treat this house. I wrote, you may have scolded us, you might have differed with us, but you always feel that we are your people and you feel this house as your own house and we feel that you are the guardian of this house. With that feeling, I differed with you
I strongly opposed you, and that opposition is ideological. But our love for you, regard for you, respect for you, sir, it is unchanged. Nobody can change it. Sir, I can tell you one more thing. When I look to the press gallery, I think why a Democrat like you still keep that house, that launch for the journalists remain like this. COVID days it was okay, but now there is no COVID. Sir, please see that whatever you can do afterwards, the house should be opened for the media. Without the media, without the public debates, without taking the message to the public, there is no meaning for a parliament. Right. I know that you understand it. Sir, while concluding, I would like to read the following, which I wrote here. Sir, thank you for upholding the greatness of this great country. Thank you for the commitments that you have cherished for the values of democracy. Thank you for the agonies that you might have experienced in your noble struggle to remain as a secular democrat in this difficult political landscape. Thank you for the tears that we showed in your eyes. That tears show who you are. I bow my head. Sir, if you allow me, I embrace you with all love, all respect, all affection, with the feeling that you are somebody so close to our hearts. I conclude, sir. Thank you. Thank you very much. Yes, Sri Ramji. Ramji. Nice.